If the mean of 5 observations x, x plus 2, x plus 4, x plus 6 and x plus 8 is 11, find the value of x. Find the value of x. Okay. Then, hello, am I audible? Now, if the mean of 5 observation is this much, then answer sum of all observations by number of observation equal to mean. Right? The formula of mean is that sum of all observation divided by number of observation, it becomes mean. Okay? Now observations are x plus 2 plus x plus 4 plus x plus 6 plus x plus 8. 1, 2, 3, 4, 5 divided by 5, it becomes, that is 11, because mean is given here 11. After that we will simply calculate it. 1, 2, 3, 4, 5. 5x plus 20. 5x plus equal to 11 into 5. It becomes 55. 5x equal to 55 minus 20. Then 35. Therefore, x equal to 7. The value of x will be 7. Write down. Okay, just wait. Very good. एक ठो कोई फॉर्मूला प्रूफ करने बोले, वो भी कर रहे हैं. ये पहले आप लोग लिख लीजिए. Completed. Rishabh. Okay. Here is the question. If the mean of 5 observation is x, x plus 2, x plus 4, x plus 6 and x plus 8, there are 5 numbers whose mean is 11. Find the value of x. According
according to the question, sum of all observations, this is the formula by which we can find the mean. Sum of all observation by number of observation. Mean equal to sum of all observation by number of observation इक्वल टू मीन. अब ये सारे डाटा को रख दिए ऐड करके, x प्लस एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस फोर प्लस एक्स प्लस सिक्स प्लस एक्स प्लस एट डिवाइडेड बाई फाइव, डिवाइडेड बाई फाइव, that is equal to 11. 11 is given, mean equal to 11 is given. After that we will calculate it. Okay. सब लोग लिखे. ऋषभ लिखे. ओके. Now may I rub the board? Okay. Now now अमन, अंजलि, अंकुर, आयुष, दिगंबर, हर्षित, हर्षिता, मुकेश, मुस्कान, निमेश, पीयूष, ऋषभ, साक्षी, सुहानी, सुशांत, तनु, तृप्ति, आनंद. Okay. Now लिसन, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में ये आएगा. राइट डाउन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कंप्यूट द मीन ऑफ द compute the mean of the following frequency distribution. Following frequency distribution. Class and frequencies. Class frequencies 10 to 30, 30 to 50, 50 to 70, 70 to 90, 90 to 110,
and frequency is 15, 18, 25, 10 and 2. 10 and 2. Right? Now first we will prepare the column. Class. Now frequency. Class 10 to 30. 30 to 50. 50 to 70. 70 to 90. 90 to 110. Frequency is given 15, 18, 25, 10, 2. Now class marks. One word is here, one term is here, that is a class marks. Lower limit plus upper limit divided by 2. Now class marks. Class marks. That is lower plus upper, 10 plus 30, 20 divided by 2, then 40 by 2, 20, 80, then 40, 60, 80 and 100. ये फ्रीक्वेंसी को FI कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, और इसको कहते हैं XI. I stand for integers. There are two types of integer. Only we will consider here positive integer. I, that is integer. Now FI into XI. Frequency का product into XI. This much 300, 720, now 0, 0, 1, 0, 800 and 200. Now this is a sigma. Sigma of Xi into Xi. Add this 0, 2, third, 3520. 3520. And sum of frequency. Sigma of Fi. 70. The sum of its frequency is 70 and sum of these. Therefore, mean equal to sigma Fi into Xi by sigma Fi 3520. Now 1010 cancel. Divide it. 352 divided by 7. 5. 35 to 0.2.
50.2 approx. Dear student, mean equal to frequency sigma fi into xi divided by sigma fi. Now fi into xi is 3520 and sigma fi is 70. After division we will get this much. Write down. Rishabh, Sakshi, class. हेलो. क्लास मार्क्स का होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2. ये फॉर्मूला होता है, ये हम यहां लिख देते हैं. फिर क्लास मार्क्स इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट whole divided by 2. Lower limit plus upper limit whole divided by 2. It becomes a class marks. It becomes a class marks. तब 10 plus 30 40 divided by 2 20. 30 plus 50 80 divided by 2 40. 50 plus 70 120 डिवाइडेड बाई 280. अब ये दोनों का प्रोडक्ट यहां लिखे हैं. 15 इंटू 2 30 एंड 10. 18 4 जा 72 10. ऐसे करके इसको सम किए और फ्रीक्वेंसी का एडिशन निकाले. अब मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ आई इसमें रख के कैलकुलेट कर दिए. Write down please. आप कहां चले गए थे ऋषभ बाबू? नहीं, अभी आपको हम ज्वाइन किए हैं. इसको पहले लिख लीजिए. Write down please. प्रोडक्ट किए हैं और सिग्मा मतलब होता है एडिशन. सिग्मा मतलब होता है सबका एडिशन. मतलब एफ आई इंटू एक्स आई का एडिशन को सिग्मा के नाम से इंडिकेट करते हैं. एफ आई इंटू एक्स आई that is known as a sigma. Okay. हो गया. May I rub this? Hello. बोलिए, सब लोग बोलिए, मिटा दे. ऋषभ, साक्षी, अंजलि, हिमांशु, सुशांत, नोनी. ओके. Yes.
Okay. Now, next, मिसिंग फ्रीक्वेंसी. पहले इंपॉर्टेंट वाला करने दीजिए. द अर्थमेटिक मीन, द arithmetic mean of the following frequency is 53. Find the value of x. Find the value of x. Datas are datas are 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, and 80 to 100. 80 to 100. Then 12, 15, 32, x 13. And we have to find the value of x. Okay. Then class, frequency, class marks, 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100. Frequency is 12, 15, 32, 20 to 40, 40 to 60, 40 to 60, 60 to 80, and 80 to 100. This one is not necessary. Now, class marks. Again, class marks equal to lower limit plus upper limit divided by 2. Then 0 plus 20, 20 divided by 2, that is 10. 20 to 40, 60 divided by 2, that is 30. 40 to 60, 100 divided by 2, 50. 60 and 80, it becomes 70 and 90. Now Fi into Xi, ये हो गया Xi और ये हो गया Fi. Fi into Xi, then 120
450, 160, now 70x, 0, right. Now sum of frequency, sigma fi. 72 plus x, 72 plus x, right? And this much, sigma fi into xi equal to 0. ऐड कीजिए 0, 7, 6, 13, 20, 17, 2, 3, 7, 8, 9, 1. ये कांस्टेंट को एक साइड और वेरिएबल को एक साथ ऐड करना है, प्लस 70x. अब लिखेंगे according to the question, sigma fi into xi by sigma fi equal to mean, और सिग्मा है 1900 प्लस 70x डिवाइडेड बाई 72 प्लस x. Mean is given 53. This is the mean is given, that is 53. Now 1900 plus 70x equal to 72 into 53 plus 53x. 70x minus 53x इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लीजिए 72 एंड 53. 3816 minus 1900, 6191, 1961, और ये हो जाएगा कितना 17x. x इक्वल टू 1916 डिवाइडेड बाई 17. इसको 17 से डिवाइड कीजिए तो, हेलो, 17 से डिवाइड की कितना, हाँ, then slab will change, right? Slab will change, then addition will another. What will be its addition? 3, 3, तब यहां पर लिखिए 3, 3, 4, 0,
3340। तो अब यहां पर माइनस कीजिए 3340, व्हाट विल बी 6 50 11 7 7 4 476 divided by 17, how much? 476 divided by 17 equal to how much? डिवाइड कीजिए। हेलो, कितना होगा? हेलो, 20, how much? After that, calculate it. It will what? Twenty-eight. 28 will be the answer. Okay? Thank you.